welcome back to CricTracker special show in the air with me, Nivedna Prabhu. Of course, India has managed to clinch the second ODI as well against West Indies by going on to win this one by 44 runs. Now, both my cricket guests had predicted this in the pre-match, लेकिन ऐसा pan out होगा was probably something that they did not expect. So, जल्दी से बुला लेते हैं मेरे पहले guest को, Gaurav Tripathi, joining me back in the studios. Gaurav, of course, you did predict that India was going to win this one, but in the end, towards the end, we did see probably somewhere West Indies could have pulled it off if it wasn't for that catch by Kohli, which was a magnificent job. Lekin on the other hand, how do you look at the second ODI just to start off with? So definitely a win for India. I mean, they have to win the series, but from any means, it wasn't a convincing win. ऐसी जीत तो नहीं चाहेगी India because we were talking about that West Indies are not having a lot of key players in the side. आप बात करें उनके पहले भी आंड्रे रसेल नहीं है, एवन लुइस नहीं है. They don't have the services of Shimron Hetmeyer, and particularly in this Test match, I mean it's ODI match. Sorry, I think Test match का फीवर अभी गया नहीं है. तो ODI मैच की बात करें तो यहाँ पर आज कैरन पोलार्ड भी नहीं थे, तो उसके बाद आप ना काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग ऑफ अ कन्विंसिंग विन, व्हेन यू आर चेजिंग डाउन अ टोटल ऑफ 177 इन 28 ओवर्स, आप एक बेटर परफॉर्मेंस देखते हैं. ये तो चीज एक डेफिनेट थी कि यहाँ पर टॉस जो है वेस्ट इंडीज ने जीता, ना कि इंडिया ने जीता. उनको पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया और यहाँ पर जो ट्रैक था वहां पर मदद थी स्पिनर्स के लिए, एंड वी सॉ दैट हाउ द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा, इवन विराट कोहली एंड ऋषभ पंत स्ट्रगल. सो आई थिंक डेफिनेटली I think we can't take anything away from Indian team that they have won this particular game and they have won the series, but a lot to look upon because काफी ज्यादा लूप होल्स हमारी टीम में सामने आए हैं कि एक डिफिकल्ट ट्रैक में जब हम बात कर रहे थे, हम क्रिटिसाइज कर रहे थे वेस्ट इंडीज को कि पहले मैच में वो एप्लीकेशन नहीं दिखा पाए और ना 177 पे बंडल आउट हुए. आई थिंक यहाँ पर भी आज भी सिमिलर केस हुआ था, हैड इट नॉट बीन फॉर समवन लाइक केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव जो कि मिडिल ऑर्डर में जाके है ना वो एक रेजिलिएंट नॉक खेला. तो आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक सो इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है, लेकिन काफी ज्यादा लूप होल्स उनके टीम में सामने आए हैं और मैं बहुत ज्यादा आई मीन आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर बहुत तीसरे ओडीआई में हम बहुत ज्यादा चेंजेस देख सकते हैं इंडियन लाइनअप में. तो Right, because with this win also they have won the series after all, so probably in the third ODI we might get to see probably few little bit of changes, experimenting, और उसके बारे में भी बात करेंगे about what really Rohit Sharma did there by sending Pant to open with him. That was quite interesting as well. हम उस पे आते हैं, but for everybody who's just joined me, hello to everyone. Tell me in the comment section what you thought of the match as well as some stellar performances. We'll also talk about Prasidh Krishna, quite impressive with the ball as well. लेकिन चिराग से पूछते हैं, my next guest joining me in the studios, उनके हिसाब से उन्होंने बोला था that Rohit Sharma would get somewhere between 80 to 90 votes. गुलाब तो 0 बच गया. वो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट हो गया ना, ऋषभ पंत आ गए तो शायद मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन वहां पर थोड़ा खराब हुआ. लेकिन आज प्रसिद्ध कृष्णा की आप जितनी तारीफ करो, आई मीन वो उतनी कम है. बहुत तारीफ मतलब अभी 10 ओवर में देखो आप, उनका इकोनॉमी रेट देखो, 4 विकेट लिए, सब 10 ओवर में 12 रन. आई मीन कमाल की बॉलिंग. इंडिया मैच जीता, सीरीज जीता, लेकिन जो टारगेट इंडिया ने सेट किया था 238 रन का, वो इतना नहीं था. आई मीन जो इंडिया का स्टैंडर्ड है वो उतना नहीं था. अभी आपने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, ऋषभ पंत को ओपन करा दिया, लेकिन जिस दिन अभी शिखर धवन अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं होंगे, चलो कोविड हुआ था, लेकिन अगर अब शिखर धवन फिट होते हैं तो क्या आप तब भी ये एक्सपेरिमेंट करोगे? क्या ऋषभ पंत फिर ओपन करेंगे? आई मीन ठीक है आप 2023 के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अब 7वें नंबर से आप सीधा ओपन करा रहे हो ऋषभ पंत को, मुझे वो समझ नहीं आया. और ऋषभ पंत फिर से वैसा वो केयरलेस शॉट खेलकर आउट हुए, उस शॉट की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं गलत था. अभी टॉप तीनों बैटर अभी देखो जल्दी आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल, आई मीन आप इन्हें जहां मर्जी खिला लो, पानी की तरह जहां से जैसा मतलब रास्ता बना ही लेते हैं, जहां मर्जी खिलाओ इन्हें. और सूर्य कुमार यादव, आई मीन हाईएस्ट स्कोर था उनका आज के मैच में, लेकिन अभी सूर्य कुमार यादव वहां पे जो 38 जो जल्दी आउट हुए ना, अगर वो थोड़ा और खेल जाते तो आई मीन ये स्कोर कुछ और ही होता. आई मीन नो डाउट सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो देखो अभी इतना कहना बहुत जल्दी हुआ कि हाँ मतलब नहीं अच्छा खेले, अच्छा है जैसा भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन रेट पर ध्यान देना होगा कि अगर टॉप के 3 बैटर्स जल्दी आउट हो रहे हैं तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो थोड़ा बड़ा रन करने का कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इनके ऊपर होता है.
Okay, so of course, Chirag has given us the entire summary of top performers as well, with Surya Kumar being so consistent with all the opportunities that he's got, which is why that conversation previously as well, that we saw last year around, March when he debuted in the T20I format as well, that it came to him really late, but he's making the best of whatever is really coming for him. So, what did you all think about Surya's performance as well as KL's contribution? Tell me that in the comment section. Simon Bhatia, I was actually hoping that you would join us on the post-match live because आपने predict किया था that you would 150. 150. So he's laughing at his own comments now, but hopefully Rohit score a few more runs in the next match. But talking about performances, of course, Chirag summarized that for us. But Gaurav, coming to you, because that big question, the big debate all over social media was when we saw Pant, walk out there. Of course, we've seen him kind of do that in the T20 format for probably Delhi. Lekin looking at it, for Team India, also that big question of that number 4, people were very divided on social media. But as a cricket fan, how do you view this? Also with experimenting, like how Chirag said, for the next 50 over World Cup. Do you think this is a smart move, or is it just experiments that might eventually pay off? Because we do know what Dhoni managed to do when he tried that with Rohit earlier. So how do you view this? If I talk about the smart move, I don't find it smart by any means because by doing this, you are just not being unfair to Rishabh Pant but to KL Rahul as well. Because आप ऋषभ पंत को क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाएंगे, आप शॉट्स खेलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो पिछली सीरीज भी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर वो 4 नंबर पे आ रहे थे, जबकि यू हैड समवन लाइक श्रेयस अय्यर हु वाज परफॉर्मिंग वेल एट दिस पोजीशन. आप ऋषभ पंत को 4 नंबर पे भेज रहे हैं. यू वांट हिम टू बैट अग्रेसिवली, यू वांट हिम टू बैट लॉन्ग, एंड फिर यहाँ पर होता है, फिर फर्स्ट मैच में ईशान किशन ओपन करते हैं, फिर नेक्स्ट मैच में राहुल आते हैं, एंड देन राहुल जो उन्होंने पिछली सीरीज में कप्तानी की थी, ओपनिंग की थी, आप उनको डालते हैं मिडिल ऑर्डर में. आप ऋषभ पंत जो जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है नहीं, आप जानते हैं कि जो पूरे जो क्रिकेट वर्ल्ड है वहां पर उनकी नजर रहती है कि ना हाउ ऋषभ पंत विल परफॉर्म, विल ही स्कोर 80, विल ही स्कोर 18, विल ही स्कोर 8. आई मीन सारी इतनी आइज होती हैं. उसके बाद आप ना ऋषभ पंत को ऐसी पोजीशन में जाते हैं दैट यू हैव टू आउट ऑफ नोवेयर ओपन द इनिंग्स अलोंगसाइड रोहित शर्मा, डिस्पाइट वी हैविंग केएल राहुल की हमने बात की, काफी वर्सेटाइल है, किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं. बट आई थिंक ये उनका खुद का एक नेमेसिस बनते जा रहा है बिकॉज इट्स लाइक कि ना ओके व्हेन द ओपनर इज इंजर्ड वी कैन यूज केएल राहुल एज एन ओपनर. आई मीन ऐसा कहाँ होता है कि अगर हम लोग अभी करंट फॉर्मेट की बात करें तो केएल राहुल ओपन इन टेस्ट फॉर्मेट, केएल राहुल ओपन इन T20 फॉर्मेट, बट ओडीआई क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं. आई मीन दिस इज लाइक टोटल, इट डजंट मेक एनी सेंस. ऐसा कभी भी होता ही नहीं है और कभी कहाँ किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा हुआ नहीं है. जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग वेल इन द मिडिल ऑर्डर, जस्ट बिकॉज ये उनकी वर्सटैलिटी है कि वो अच्छा कर सकते हैं. इट्स नॉट फेयर फॉर द टीम मैनेजमेंट कि वो उनको शफल करते रहें कि आप अवेलेबल, शिखर धवन अवेलेबल नहीं है तो यू विल बैट एट द टॉप. एंड आई थिंक शिखर धवन बीइंग 36, ही इज परफॉर्मिंग वेल. Next year he'll be 37. By the end of the 2023 World Cup, केएल राहुल के पास फिर भी 10 साल का क्रिकेट रहेगा. So what are you planning? आप उनको वापस ओपनर बनाएंगे और या लाइक ही इज योर नंबर प्रॉपर 4 पोजीशन. आई मीन, और हमने बात की है कि ना ओडीआई मैचेस बहुत ज्यादा हो नहीं रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको एक्सपेरिमेंटिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए. यू शुड लुक फॉर अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन. आप साउथ अफ्रीका में आपका लाइनअप कुछ और ही था, यहाँ पर कुछ और ही, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और ही है. दिस आर नॉट गुड साइंस फॉर इंडिया. जस्ट बिकॉज आई थिंक वो इंडिया मैच जीत गई तो आई थिंक ये सब के बारे में बात इतनी होगी नहीं. अगर हार जाते हैं तो ऑब्वियसली और ज्यादा हाईलाइट होता, बट फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान मुझे नहीं लगता कि जो माइंडसेट है, जो स्ट्रैटेजी है एक्सपेरिमेंटिंग की, बहुत ज्यादा आई मीन पे ऑफ करेगी फॉर द इंडियन टीम. Okay, Right. so that of course is a strong opinion coming from Gaurav. Apart from being a cricket guest, of course, as an Indian cricket fan, the way he really views it, because like he said, if you keep shuffling like musical chairs at the end of the day, it's unfair to the player as well. लेकिन आप सबको क्या लगता है? Tell me that in the comment section with what you saw today. But 2 performers who were absolutely amazing with the ball, even for West Indies. If we were to speak about Odin Smith, if you could look at his stats, where he did get 2 wickets in 7 overs with at an economy of 4.10, but दूसरी तरफ an absolute stellar performance like what Chirag said is Prasidh Krishna has proved magnificent in that 9 overs with 4 wickets at an economy of 1.30. Gaurav, coming to you about Prasidh, because Chirag's already spoken to him about us. What was that technique like today going into this particular match? We don't have the stats of Deepak Hooda here
you could also mention that he went on to get his first wicket as well. Yes. Yeah. Which is great as well. So looking at the technique of both these bowlers, what did you really like in today's match? See, Prasidh Krishna, I think the best thing is that he's a tall guy. I mean, we don't have among the Indian fast bowlers, we don't have many guys apart from Ishant Sharma who are bowling from such height. So definitely वो एक advantage है, but it's something which is in your nature. वो आप actually gain नहीं कर सकते by doing anything. So definitely, लेकिन उनका वो काफी अच्छे से use करते हैं. He knows that he can hit the deck hard. He can get the ball move from the surface. Like वो ये सब समझते हैं और उसको use भी करते हैं. हमने उनका इंटायर जो करियर देखा है ओडीआई करियर सो फार इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन हिज फिगर्स आर लाइक 6 मैचेस एंड समवट 15 रन्स अपने उन्होंने ओडीआई में अपने 4 विकेट हॉल लिया था एंड देन इन द लास्ट ओडीआई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो उनका इकलौता अपॉर्चुनिटी था उस इंटायर टूर में वहां पर उन्होंने एक 3 विकेट हॉल लिया पिछले मैच में अच्छा किया यहाँ पर इतना अच्छा एक स्टेलर परफॉर्मेंस किया so definitely he is taking a claim in the first choice playing 11 as far as ODIs are concerned और ये अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं अपनी वीकनेस को समझते हैं और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है समवन लाइक प्रसिद्ध कृष्णा 25 year old एंड just because इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बाद आई पर्सनली फील दैट he is going to do a lot better in red ball cricket so definitely I think एक और मैच होने वाला है और फिर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होने वाली है सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इंडियन टीम ऑप्ट करती है कि एक श्रीलंकन टीम जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है वहां पर बुमराह और शामी को प्रेस दे और समवन लाइक प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज और इवन समवन लाइक नवदीप सैनी आप इनको ट्राई करें तो डेफिनेटली आई थिंक दीज आर गुड साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट Okay, so Gaurav already made his prediction for the next series as well. So काफी interesting है that of course we're also looking at the amount of talent that we've always spoken about in the Indian cricket team currently as well, opportunities, and they have to make the best of it. But also talking about something that is happening on social media whenever a particular match happens is reactions on social tracker. So Chirag, if you could take our audience through whatever is happening on social tracker. जस्ट ऋषभ पंत थिंग्स और ये सोच रहे हैं यार मुझे आज ओपन कराया पर कराया तो क्यों कराया मतलब क्यों जरूरत क्या थी मैं अच्छा तो था ठीक है साथ पर बिल्कुल ऐसा लगा इट्स नॉट एवरीवन कप ऑफ टी टू परफॉर्म इन एवरी पोजीशन अंटिल ही इज केएल राहुल बिल्कुल सही बात है बिल्कुल पानी की तरह मतलब अपना रास्ता कहीं से भी निकाल लेते हैं वेल जितनी तारीफ करो उतनी कम देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ कैप्टन विराट कोहली मतलब जब भी कोई विकेट ले रहा था विराट कोहली से ज्यादा वहां पर फील्ड पर खुश कोई उनसे ज्यादा खुश कोई दिखाई दे ही नहीं रहा था मतलब यही फर्क है लीडर और कैप्टन में एक लीडर हमेशा लीडर रहता है फिर चाहे वो कैप्टन हो चाहे ना हो whatever the hell is happening in the field today it's Rohit Sharma script believe in this man हम तो बिलीव करते ही है भाई हमारे कैप्टन है टीम इंडिया के कैप्टन इतना अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं एक्सपीरियंस्ड है the way Virat celebrates every wicket is just awesome. ये वही बात जो हमने कही कोई भी विकेट गिरे विराट सबसे पहले आते थे सेलिब्रेट करते बहुत अच्छा लगता है ऐसा स्पिरिट देखना मतलब पहले बहुत सारे रूमर्स थे कि कैप्टनसी से हटाया तो कहीं ना कहीं वो बहुत ऐसा लड़ाई वड़ाई कुछ ऐसा नहीं है मतलब सब खुश है सब बढ़िया तो जो होता है अंत में अच्छे के लिए होता है probably what Chirag is saying. Only if he can translate और अभी मेगा ऑप्शंस भी आ रहे हैं मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा के भाव अब बढ़ चुके हैं मेगा ऑप्शन आ रहे हैं talking about that also slightly we'll also be keeping all of you updated about the mega auction जो Chirag ने अभी बताया don't forget to follow all our social media channels we will join you once again for the third ODI between India and West Indies to be discussing वहाँ पे क्या होगा on that note I want to thank Chirag and Gaurav for joining me in the studios and all of you as well we will see you very soon on the other side until then of course take care of yourself